हेलो। यस सर। शाहीन। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब ठीक हो? यस सर। गुड। हेलो। हेलो। यस सर। बेटे कितने लोग आए हैं बेटे? 3। यस सर। चलो ठीक है, मत आने दो। सर अभी आ रहे हैं सर, सब धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं। हाँ ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। बेटे आज का टॉपिक है, म्यूजिक टॉपिक है। आप लोग जानते हैं, इससे वाकिफ हैं। दैट इज विटामिन। These are organic substances. These are organic substances required in a small amount. These are organic substances required in a small quantity, a small amount, and it is not usually synthesized in the body. And it is not usually synthesized in the body. Hence, taken from outside. Hence, taken from the outside in the diet. Hence, taken from the outside in the diet. They act as they act as a catalytic cofactor. They act as a catalytic cofactor
coenzymes for biological reactions. अब विटामिन देखो दो तरीके के होते हैं, सब आपको पता ही है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। सो फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। और वैसे होते कितने हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो फर्स्ट वन इज द विटामिन ए। Vitamin A. It is also called retinol. It is also called retinol. It is a fat soluble vitamin. The important functions are first function is vision. The first function is vision. It plays an important role. It plays an important role in vision by forming. It plays an important role in vision by forming prosthetic group of a series of carotenoid proteins that provide molecular basis for visual excitation. Second, sir, visual. Visual excitation. EXCITATION excitation. Second function is cell differentiation. Retinoic acid, retinoic acid, retinoic acid, another form of vitamin A, induces epithelial cell differentiation, by binding to a specific receptor, binding to a specific receptor
which turn on responsive gene, which turn on responsive gene in deficiency, mucus secreting cells in deficiency, mucus secreting cells are replaced by keratin producing cells. In vitamin A deficiency, mucus secreting cells are replaced by keratin producing cells. Third function, anti-infective vitamin. Anti-infective vitamin. Its deficiency in children predisposes them to respiratory and gastrointestinal infection. Its deficiency in children predisposes them to respiratory and gastrointestinal infection. Fourth function, essential for growth, reproduction, and maintenance of life. It is essential for growth, reproduction, and maintenance of life. Its role in sugar transfer reaction. Its role in sugar transfer reactions, synthesis of glycoprotein. Its role in sugar transfer reactions, synthesis of glycoprotein, and presence in the cell membrane makes it a vital vitamin. Fifth function, antioxidant. Fifth function is antioxidant. Vitamin A is an antioxidant vitamin. Next is daily requirement of vitamin A. Vitamin A का daily requirement कितना है? Daily requirement of vitamin A. In infants, that is up to 1 year, daily requirement of vitamin A is 400 μg per day. 400 μg per day. In children, 400 to 700 400 to 700
μg per day. In adult male, 1000 μg per day. In adult female, 800 μg per day. 800 μg per day. In pregnant woman, 800 plus 200 additional requirement. 800 plus 200 additional requirement. Lactating mother, 800 plus 400 additional requirement. So this is the daily requirement of vitamin A. Next is इसकी ऐसी कौन कौन सी डाइट है जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है. So dietary sources. Animal food is the main source. Animal food is the main source. And the liver being the richest. In vitamin A. Vegetables and fruits are other common sources of vitamin A. Vegetables and fruits are other common sources. Vegetable and fruits are other common sources of vitamin A, which included leafy vegetables, yellow orange fruits, where it is present in provitamin form, in the form of provitamin, that is beta carotenoid. Beta carotenoids. Sources of vitamin A. तो थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं. Animal sources: milk, butter, cheese, egg yolk, fish, liver oil, etc. Then beta carotene in plant source. इसमें क्या क्या आता है? कैरोट, गाजर, it is the richest source. Carrot, dark green leafy vegetables, yellow fruits,
and red palm oil, etc. Clinical deficiency. Vitamin A deficiency causes 6 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। पहला क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड, जीरोप्थेल्मिया, XEROPHTHALMIA, जीरोप्थेल्मिया। थर्ड, केराटोमैलेशिया, केराटो, KERATO, केराटो, KERATOMALACIA, केराटोमैलेशिया। Then xerosis, XEROSIS, xerosis. Next, hyperkeratosis of the skin, and last is Bitot spot, Bitot, BITOTS, Bitot spot. तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये 6 प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? सो रिगार्डिंग नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी leads to defective dark adaptation, due to defective synthesis of rhodopsin, in roads on which dim light vision depends. Night vision is a common symptom of vitamin A deficiency. Night blindness is a common symptom of vitamin A deficiency and is a common cause of blindness in the young in the developing countries. So this is about the night blindness. इसमें क्या होता है आप सब जानते हो, शाम के समय जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है पेशेंट को दिखाई देना कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंड। The second deficiency cause is xerophthalmia, XEROPHTHALMIA. Xerophthalmia means dryness of the eyes. इसमें आई कैसे हो जाती है? ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ द आईज। Earliest sign is dryness of the conjunctiva.
is dryness of conjunctiva, which gives smoky appearance, which gives smoky, S-M-O-K-Y, which gives smoky appearance when dryness spread to cornea. When dryness spread to cornea, it becomes dull, hazy, H-A-Z-Y, hazy, due to keratinization, the stage is called xerophthalmia. The next deficiency feature is Bitot spot. Bitot, B-I-P-O-T-S, B-I-P-O-T-S, Bitot spot. अब ये क्या होते हैं? These are triangular, glistening, G-L-I-S-T-E-N-I-N-G. So these are triangular मैंने हिंदी में क्या बोले इसको? त्रिकोणे. These are triangular, glistening, G-L-I-S-T-E-N-I-N-G, glistening white spots. These are triangular, glistening white spots formed by plaques, P-L-A-Q-U-E-S, by plaques of desquamated, D-E-S-Q-U-A-M-A-T-E-D, by plaques of desquamated conjunctival epithelium, by plaques of desquamated conjunctival epithelium. These are triangular glistening white spots formed by plaques of desquamated conjunctival epithelium. These are seen lateral to the cornea. Near the angle of the eyes. These are seen lateral to the cornea near the angle of the eyes. This is a Bitot spot. Next deficiency feature of vitamin A is keratomalacia. Kerato, K-E-R-A-T-O, kerato, K-E-R-A-T-O, kerato, malacia, M-A-L-A-C-I-A, keratomalacia. This is a cause of blindness, insulins. Less than 5 years. It also occurs in persons
who have been living for a long period, who have been living for a long period on diet deficient in vitamin A, on diet deficient in vitamin A. This condition is frequently associated. This condition is frequently associated with protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PEM. कैपिटल P, कैपिटल E, कैपिटल M. फिर सुन लीजिए. Keratomelasma. This is a cause of blindness in children less than 5 years. It also occurs in persons who have been living for a long period on diet deficient in vitamin A. This condition is frequently associated with protein energy malnutrition. Next deficiency feature is xerosis and hyperkeratosis of the skin. बिलाल, आपका माइक बंद कर दीजिए. थैंक यू. Xerosis and hyperkeratosis of the skin. Xerosis and hyperkeratosis of the skin. Vitamin A deficiency leads to replacement of mucus secreting cells. Vitamin A deficiency leads to replacement of mucus secreting cells by keratinized cells. Hence, xerosis, XEROSIS. Hence, xerosis and hyperkeratosis result as important sign of its deficiency. Hence, xerosis and hyperkeratosis results as important sign of its deficiency. Then treatment. जिसके विटामिन ए डेफिशिएंसी है उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे? Treatment. Immediately after making the diagnosis, a single dose of oral retinol palmitate, retinol, retinol, retinol palmitate, PALMITATE, retinol palmitate कितना देते हैं? 60 मिलीग्राम, 60 milligram may be given in case of diarrhea. अगर उस पेशेंट के डायरिया हो रहा हो, in case of diarrhea तब कितना देते हैं? 50 मिलीग्राम देंगे इंट्रावेनसली. In case of diarrhea 50 milligram
is given intravenously. Second dose may be repeated next day. Second dose may be repeated next day. And last or third dose is given at the time of follow-up visit. So this is the treatment of vitamin A deficiency. अगर अब ये भी गलत है कि पता चला विटामिन ए की डेफिशिएंसी, उसको इतना विटामिन ए गिरा है कि बॉडी के अंदर हाइपर विटामिनोसिस ए हो गया. सो नेक्स्ट इज हाइपर विटामिनोसिस ए, दैट इज विटामिन ए टॉक्सिसिटी. hypervitaminosis A, that is vitamin A toxicity. अब इसमें एक होता है acute toxicity. Acute toxicity from a single light dose. Acute toxicity from a single light dose consists of abdominal pain, nausea, vomiting, headache, dizziness, पेपरिडीमा. फिर सुन लीजिए, अगर किसी के एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे. एक्यूट टॉक्सिसिटी फ्रॉम अ सिंगल लाइट डोज कंसिस्ट ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगी, नोजिया, उबकाई आएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, पलटी आना, हेडेक, सर में दर्द, डिजीनेस, पेपरिडीमा, and in infants a bulging fontanelli कहाँ होता है, इस जगह सॉफ्ट कॉर्नर जहाँ पर ये 2-3 बोन आपस में यूनाइट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर fontanelli. यहाँ पर होता है, पीछे भी होता है. एंड इन इन्फेंट्स, यानी ये एंटीरियर fontanelli का ये वाला पॉइंट हो गया. एक पैराइटल बोन इधर हो गई, एक इधर हो गई और सामने फ्रंटल बोन हो गई, जहां तीनों यूनियन पॉइंट होता है. दिस इज कॉल्ड एंटीरियर fontanelli. And in infants, a bulging fontanelli, fontanelle, fontanelli, followed by desquamation of skin, followed by desquamation, desquamation, desquamation of skin. Recovery occurs within few days. और दूसरी टॉक्सिसिटी होती है chronic toxicity. Chronic toxicity occurs following the ingestion of large dose for a prolonged period. काफी लंबे समय से विटामिन ए ही खाए जा रहे हैं. Chronic toxicity occurs following ingestion of large dose for a prolonged period
The features include bone and joint pain, hyperostosis, hyper, H-Y-P-R, hyperostosis, O-S-T-O-S-I-S, hyperostosis, hair loss, dryness of the lips, weight loss, benign intracranial hypertension, and hepatosplenomegaly. अब ये हिपेटोस्प्लीनोमेगैली क्या चीज होती है? इसमें जब लिवर इनलार्ज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हिपेटोमेगैली। जब स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमेगैली। और जब दोनों इनलार्ज हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। अब इसका ट्रीटमेंट क्या? रिलीफ इज मतलब तुरंत उसका विटामिन ए देना बंद कर दिया जाए। रिलीफ इज प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट मैंने तुरंत, PROMPT। Relief is from prompt on withdrawal of vitamin from the diet. So this is about the vitamin E. Next fat soluble vitamin is vitamin E. Vitamin E. 8 naturally occurring tocopherols. Vitamin E. 8 naturally occurring tocopherols. 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 PHEROLS. So 8 naturally occurring tocopherols. कौन कौन से हैं ये? अल्फा, बीटा, गामा and delta tocopherols. Alpha, beta, gamma and delta tocopherols and alpha, beta, gamma and delta tocoterinols. Terinols. T-E-R-E-N-O-L. Tocoterinols. So 8 naturally occurring tocopherols possesses vitamin E activity. It is a lipid soluble vitamin. Which is transported from gastrointestinal tract, which is transported from gastrointestinal tract by lipoproteins and distributed widely in all the cell membrane throughout the body. So it is a lipid soluble vitamin which is transported from the gastrointestinal tract by lipoproteins and distributed widely
in all the cell membranes throughout the body. फंक्शन, अब विटामिन ई का फंक्शन क्या है? 4 फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट rather than a cofactor. It acts as an antioxidant rather than a cofactor. It prevents oxidation. It prevents oxidation of polyunsaturated fatty acids. It prevents oxidation of polyunsaturated fatty acids in all the membranes by free radicals. Second function, a popular belief that it is anti-fertility vitamin, could not be proved. It has not been proved. It has not been proved that it increases sexual performance. Third function, it is believed to be effective. It is believed to be effective in protecting against atherogenesis by its antioxidant effect. Fourth, it is useful in muscle cramps. It is useful in muscle cramps. So these are the function of vitamin E. अब विटामिन ई का डेली रिक्वायरमेंट कितना है? डेली रिक्वायरमेंट, the daily requirement of vitamin E in male is 7 से 10 मिलीग्राम, 7 to 10 milligram per day, 7 to 10 milligram per day, and in women 5 to 8 milligram per day, 5 से 8 मिलीग्राम। किस डाइट में विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है? डाइटरी सोर्सेस, whole grain cereals, vegetable oils, and nuts are a rich source of vitamin E.
अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? क्लिनिकल डेफिशिएंसी। Clinical deficiency. Vitamin E deficiency is associated with vitamin E deficiency is associated with other lipid soluble vitamins deficiency. Vitamin E deficiency is associated with other lipid soluble vitamin deficiency which occur in malnutrition syndrome, which occur in malnutrition syndrome and chronic polystatic liver disease and chronic polystatic CHOLESTATIC cholestatic liver disease. The manifestation of its deficiency include mild hemolytic anemia, spinocerebellar degeneration, spinocerebellar, CEREBELLAR, spinocerebellar degeneration, simulating में उस जैसा लगना, simulating Friedreich ataxia, Friedreich Friedreich की स्पेलिंग क्या है? FRIED, Friedreich RICHS, Friedreich ataxia, Friedreich ataxia. इसमें क्या होता है? characterized by limb ataxia, sensory loss, absent tendon jerks, speech disturbances and retinal degeneration. All these symptoms and signs response to vitamin E replacement. All these symptoms and signs response to vitamin E replacement. अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है? ट्रीटमेंट 50 to 100 international unit of vitamin E, 50 to 100 international unit of vitamin E orally per day is most effective when started early in the course of the disease. The antioxidant effect can be achieved with 100 to 400
international unit per day. So this is about the vitamin E. Next vitamin E is vitamin K. तो आज इसको भी खत्म करते हैं बेटे। बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर लेना होगा मैं आपको बता दूंगा। आज बाकी सब तो कहाँ गायब है? बिलाल, जी बाकी सब गायब हैं बेटे? क्या सर? हाँ सर, बाकी आज बहुत कम लोग हैं, नहीं बाकी दिन तो रहते थे सर सब लोग। हाँ, आज सब हमें लगता है रस फरमा रहे सब। जी सर, लगभग बहुत है? कम। पर डे तो 20 लोग लगभग तो हो ही जाते थे। हाँ, 20 आज लोग 25 लोग। कितने हैं मेरे को मिल रहा है? 9 लोग। हाँ, 12 दिखाई दे रहे हैं बेटे इसमें शायद। हाँ चलो, जैसे जिसकी इच्छा हो बेटे, है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अच्छा बेटे, आज था ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे। कल 1 घंटे की क्लास किस समय रखी जाए बेटे? टाइम बताओ। शाहीन आप बताओ बेटे। हेलो सर 11 to 12 है बेटे? 11 11 बजे सुबह? सर यही 2 से 3 सही। चलो बेटे, 2 से 3 सही रहेगा, है ना? यस सर, ये जी टाइम सही है। ठीक है, तो कल फिर 2 से 3 रख लेंगे बेटे। ओके यस सर। सर, यस सर। आप में मेंशन कर देना बेटे, है ना? ओके सर। हाँ, कल का भी रख लेंगे और कल देख लेंगे कितना होगा, फिर जरूर समझेंगे तो परसों, कल परसों दोनों रख लो। यस सर। हाँ, ठीक है, चलो बेटे, बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो बेटे, अल्लाह हाफिज़ बेटे। अल्लाह हाफिज़।